गाइस कितना छूटा है आप लोगों का यार. I did not realize that we got disconnected. Did you write the statement, Zaina and Harsha? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से देखिए. So basically what happens, you have HX, halogen atom which is more electronegative, it will pull the electron density from hydrogen to halogen atom, making it delta negative. Hydrogen will get a positive charge, delta positive. The oxygen lone pair electron will attack the hydrogen, it will give you alcohol, and the rest will give you haloalkane. So generally ये reaction है, but we are going to see different cases for symmetrical ethers, unsymmetrical ethers. Ether, then we have diaryl ether. At least there are 4 cases that we have to see. ठीक है, चलिए. Done till here, no? You wrote the reaction. We're done writing the reaction. We write symmetrical ethers. In this, the A case that we have to see is symmetrical ethers. All symmetrical ethers react with HX. Symmetrical ethers. By the way, am I clear? Or is my voice breaking today? No, sir. Harsha? It's fine? Yes, sir, it's fine. In symmetrical ethers, it's very easy. Okay. No matter which part gets belongs, I mean, gives you alcohol and which gives alcohol, it doesn't really matter because CH3O CH3. Okay. So the main question is which carbon will get the halogen? कौन बाकी तो फिर alcohol बन जाएगा, right? Because oxygen is going to get the hydrogen no matter what. हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को ही मिलेगा. बात यह है कि हाइड्रोजन किसको मिलना है. यहाँ पे तो कोई, I mean, this gets halogen or this gets halogen, it's the same thing. You'll always get CH3OH plus CH3. Let's suppose we have HI, which generally use किया जाता है. आयोडीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. Similarly, if I have 2 carbon atoms and then oxygen diethyl ether, I react this with that. Suppose we have HBr. Here also it doesn't really matter. This is 2 carbon atoms. It will give ethanol. Let's suppose, and here you will get 2 carbon atoms and iodine, iodoalkane. Okay. Even if you have something very different, like for example, you have something like this. Okay. And you are having, let's suppose, HI. In this case also, what is going to happen? Please, यहाँ पे कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत है. That you will have this fragment will give you alcohol. In this fragment, yeah, this fragment is the same thing. So you'll have 1 carbon, 2 carbon. Till oxygen, you will make everything as it is. You will add a hydrogen here plus. Now please understand, this fragment will be getting the halogen. So halogen जो मिलेगा आपको इस तरह से कुछ मिलेगा. इस तरह से OH है ना, बिल्कुल वैसा ही आपके पास क्या रहना चाहिए? X. नहीं, X, हाँ X इस तरह से. Make sense? 3 carbon atoms. यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3. जहाँ OH है, या तो मतलब ऐसे ही लिख सकता है. जैसे OH है ना, वैसे बना देना. But have made it like this also. Halogen, same thing. ठीक है. तो जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, इफ यू राइट द नेम्स ऑफ द, देन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड. एक नेम के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेस एडजस्ट कर लिया अपने नोटबुक में. ठीक है. दिस इज मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल. दिस इज मिथाइल आयोडाइड. बाय द वे, इस नेक्स्ट वाले में Br होगा. मिस्टेकनली रोट आयोडीन, मतलब Br होगा. Here you have ethyl alcohol. Methyl alcohol. Here you have ethyl bromine. If you look at this fragment, this is 3 carbon atoms, and this second carbon, तो ये isopropyl alcohol बोल सकते हैं इसको. Isopropyl alcohol. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? Isopropyl. ऐसे ये आयोडीन होगा हमारे पास. Isopropyl iodide. Make sense till here? Yes or no? Please tell me. Harsha, Zaina.
Yes, sir. Yes, sir. Okay, copy. Is everyone done? Yes, sir. It's basically if we have unsymmetrical features, the part is unsymmetrical features. Number one, point, you read with me, you will understand. Check if there, check if there is any 3-degree alpha carbon, then attach halogen to that carbon. Halogen to that carbon. Okay. And remaining fragment will form halogen. So by the way, Zaina and Harsha, can you please send in chat the बकरीद हॉलीडेज आपके स्कूल में कब से कब तक बकरीद की छुट्टियां हर्षा एंड जैना कितना लिख लीजिए वो छुट्टियां भेज दीजिए फिर हम समझाते हैं आपको हाउ टू डू दिस हर हर्षा एंड जैना send me the dates of Bakrid holidays no? In the chat. If you have got from school, did you get it? Zaina, Harsha, Yes, I मिला have to आपको? check. Yes, sir. One second. Do you have to check? ठीक है ठीक है Okay, Harsha. Waiting for Zaina.
जाना आपको नहीं मिला अभी तक? जाना I can't find the date, but this is the last week now. It'll start from next week. तो 16, 17 ऐसे कुछ है हॉलीडेज राइट? So, ठीक है can I ओके। text you later? I need to search. हाँ दैट्स फाइन नो प्रॉब्लम। जी 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 ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर देखिएगा व्हाट वी सेड चेक एनी थ्री डिग्री अल्फा कार्बन है ना अल्फा कार्बन क्या होता है वो बताते हैं देन अटैच हाइड्रोजन टू दैट कार्बन एंड रिमेनिंग कार्बन टू फॉर्म अल्कोहल फॉर एग्जांपल इफ आई हैव समथिंग लाइक Sir, your voice isn't clear. दैट now any better No, sir, it's still cracking. like what so is this cracking now how about now Yes, sir, better. better let me just read this check if there is any 3 alpha carbon then attach halogen to that carbon and remaining fragment will form alcohol ठीक है and let's suppose you have something like this you have an ether like this. Now, this oxygen atom is connected to 2 carbon. Both of these carbon atoms are alpha carbon. And this is going to be also alpha carbon. This is also going to be alpha carbon. As we can see, this alpha carbon is what? It is 3 degree. And this alpha carbon, it is 1 degree. Right? So, what the suggestion, I will explain the mechanism and everything. But what the suggestion is, like how to make the product. You attach the 3 degree carbon. Let's suppose we have HBr. ठीक है and rest of the fragments will become what alcohol. आपको ये बॉन्ड तोड़ना होगा 3 डिग्री वाले अल्फा कार्बन you have to break this bond make everything as it is उस बॉन्ड के अलावा you will have something like this and यहाँ पे आपके पास आ जाएगा here you will get Br hydrogen will be like this plus you get 1 carbon 2 carbon and OH 1 carbon 2 carbon OH make sense yes or no please tell me Yes, sir. देख लीजिए formation है similarly let's suppose you have CH3 CH2 O carbon. Here and here we have CH3. Here we have CH3. Here we have CH2 and CH2. Let's suppose we are reacting this with HI. So need to identify this carbon is going to be 1 degree carbon. This carbon is 3 degree carbon. So this bond is going to break, and I will have this as the alcohol. So 1, 2, 3 carbon atoms. 1, 2, 1 atoms plus 1, 2, 3 carbon atoms. 2, 3 carbon atoms. This carbon atom is having some groups. And फिर इसके बाद क्या मिल जाएगा it will get iodine ठीक है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है then I will write it like this the problem और इसमें यहाँ पे iodine bonded to carbon which is bonded to CH3 is bonded to CH3 is bonded to CH2 is bonded to CH3 कॉपी कर लीजिए जरा let me know once you're done copying waiting for Harsha ठीक है let us just see how why this 3 degree thing is preferred तो कुछ ले लेते हैं ऐसे ही बस and here we have let's suppose 3 degree ठीक है प्लस we have H प्लस अच्छा H प्लस कहाँ से आ रहा है बाय द वे तो आपके पास जो HBr है
और HI है जो भी है वहां पे वो डिसोसिएट कर जाएगा, राइट, दैट HI विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड I नेगेटिव। ठीक, चलिए इसको भी लिख लेते हैं बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए कि HI H प्लस आ कहां से रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या लिखना है, you have please see this then you will write है ना, HI and this is coming from H plus and HI negative, these are the ions it will dissociate into. You have H plus ion and this oxygen low electron, it will tap on the H plus ion and it will get protonated. You'll have two carbon atoms, oxygen with hydrogen, and you have like this positive। ठीक है, इधर आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन है। So what will happen? Oxygen with a negative, oxygen with what a positive charge will take the electrons from this carbon atom. Why? Because if it takes from this carbon atom, it will form a 3-degree carbocation which is much stable, which is very much stable. ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होगा? This is the second step. Third step में आपके पास you will have two things. ना ये तो आपके पास अल्कोहल दिख ही रहा होगा, 1 2 carbon and OH, 1 2 carbon and OH will be formed. Plus you will have something like this, a carbocation with 3 carbon atoms। देखिए 1 carbon 2 carbon 3 carbon मतलब 4 carbon atoms। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बट इट इज व्हाट इट इज having 4 carbons, so it is 6 degree carbocation। And then what will happen? The iodine negative it will attack on this carbon atom, making it 1 2 3 carbon atoms लगा हो, iodine लगा हो। So that is why you are going to get what products, the alcohol as well as the iodide। Okay, so they ask why 3 degree alpha carbon gets the, why the 3 degree carbon gets the halogen atom, because 3 degree carbocation is more stable in the mechanism। Copy this down, let me know once you're done। Waiting for Zaina। Okay। Next है आपके पास second, please write with me, if only 1 degree and 2 degree alpha carbon are present, alpha carbons are present, then the alkyl group which is less hindered, which is less hindered will get halogen, and rest of the fragment, and the rest of the fragment will form alcohol। For example, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, like this if you have oxygen and then you have something like this, यहाँ पे आपको देखा होगा this is 2 degree, this is 1 degree रिएक्शन विद HI। बताइए कहाँ पे आयोडीन अटैच होगा, 1 डिग्री पे या 2 डिग्री पे? हर्षान जाए ना, where will the iodine get attached, 1 degree or 2 degree? कौन सा लेस हिंडर्ड होगा? 1 degree। है ना, ठीक है जायना, आप याद रखिएगा लोअर द डिग्री, ठीक है, दैट इज लेस हिंडर्ड। नेक्स्ट है जायना, Yes, sir. 1 degree. ठीक है। तो इससे इधर से 2 डिग्री से आपके पास अल्कोहल आ जाएगा, सो यू मेक एवरीथिंग एज इट इज इन द 2 डिग्री विद द ऑक्सीजन एटम एंड ऐड द हाइड्रोजन हियर प्लस, बस इस तरह से आपको क्या हेल्प कर देना, आयोडीन। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स एंड आयोडीन। लेट्स सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, लेट्स सपोज यू हैव 1 2 कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एंड देन यू हैव हियर द CH3। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए व्हिच इज लेस हिंडर्ड, the ethyl or the methyl, which is ना, लेफ्ट राइट वाला बता दीजिए। एक कार्ब, हाँ methyl is less hindered, so that will get the bromine, है ना। तो क्या मिल जाएगा उसको, हाइड्रोजन उसको मिलता है which is less hindered, plus you will get 2 carbon atoms and OH। even though both of them they are let's suppose 1 degree 1 degree में अगर हम देख लें, for example if you have 1 2 3 carbon atoms and oxygen, and here you have just 2 carbon atoms, which is less hindered, the 2 carbon atoms is less hindered। in this case the 3 carbon atom will give you alcohol
and the 2 carbon atom will give you alkyl iodide. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Topically used up. Raise your hand once you're done. Practice कर लीजिएगा, but please whatever we are doing, okay? जो कुछ करे ना उसको repeat करना आप लोगों को. ठीक है, तो done. Next. Okay, you can lower your hand. Third one is alkoxybenzene. Alkoxybenzene. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा. Alkoxybenzene always forms and haloalkene. Phenol and haloalkene. क्या मतलब है? And why does it cause? The C bond, double bond character, and difficult to break. And difficult to break. देखिएगा. Let's take a simple alkoxybenzene, oxygen, and यहाँ पे आपके पास मान लीजिए general R ले लेते हैं. So here we have electron, so this bond will be what? Partial bond. This bond can never break. What will? So आपके पास क्या मिलेगा? In H time, you will get the oxygen will be as it is. The CO bond will be of एक second. CO bond has of कैसे लिखिएगा इसको? ऑफ phenyl. ठीक है, CO bond phenyl. phenyl नहीं होगा, phenoxy नहीं होगा. ऑन phenyl ठीक रहेगा. ठीक, ऑन phenyl कर दीजिए. ठीक है, this is what we have added. CO bond on phenyl has double bond character. So what will happen? This will be giving you OH plus RI, alkyl iodide. And if you have, for example, something like this also, यहाँ पे आपको Br मिल जाएगा. Raise your hand once you're done. Waiting for Zaina. ठीक, फोर्थ किसी का? Benzyl alkyl ether. ठीक है, so you have something like this. Benzene, CH2O and R.
यहाँ पे आपके पास, ठीक है. Now please understand that if you are going to break this bond, ध्यान दीजिएगा जरूर. If you are going to break this bond, this carbon will get a positive charge, resonance stabilized. So that is why only what will happen, this bond is always going to break. So you will always get a benzyl halide. Benzyl halide क्या होगा? You will have the benzene ring and then a CH2, and then you will get the iodine. So this को क्या बोलते हैं? Benzyl halide, ठीक है? Plus you will get alcohol, ROH. So for example, if you have something like this, oxygen, and let's suppose we have two carbon atoms like this, in the presence of HI, this one will get what? ये benzyl मिलेगा इसमें, yeah? Because here you have a CH2 group on benzene ring. Aryl and benzyl are two different things. Haloalkane, halogen हम लोगों ने पढ़ा था. So you'll have CH2 and then you will get iodine. Plus alcohol कहेगा आपको something like this. ठीक है? Also let's suppose you have something like this. अब ऐसे दिया CH2OPH. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. This oxygen phenol will have resonance. तो ये तो डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं. This will break because शिफ्ट आ जाएगा and this resonance stabilize. So after reaction with HI, pH का मतलब benzene ring होगा ना, phenyl group. The pH will be as it is, the CH2, and then you will have the iodine, plus you will have PHOH, that is phenol. Make sense this one? Yes or no, please tell me. Harsha and Zaina? Yes, sir. ठीक है, चलो. Benzyl halide is formed as reaction occurs via SN1 and benzyl carbocation. Benzyl carbocation is very stable. Yeah, how can we tell if it's SN1 or SN2 reaction? How can you tell it if it is reaction? ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिएगा वहां पे सबस्ट्रेट. If there is possibility of if there is a possibility of formation of carbocation or there is a possibility of rearrangement in a single step, तो वहां पे SN1 होता है. ठीक है, and 3 डिग्री always SN1, 1 डिग्री always SN2. ठीक है, 2 डिग्री में मामला जनरली फंस जाता है. इन 2 डिग्री देन यू विल सी हाउ द रिएजेंट इज. रिएजेंट कैसे है आपका? इफ द रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग, जैसे मान लीजिए उसमें चार्ज वगैरह हो, जनरली द रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग. मान लीजिए आपके पास OH नेगेटिव है, दैट हैज अ चार्ज. OH negative can do HN2 reaction. But for example, if you have water, जिसमें कि oxygen का lone pair is acting as a nucleophile, that is neutral, so the water will not have to remove the halogen atom. मतलब कोई भी इस तरह का मतलब न्यूक्लियो ब्रेक, H2 will not be a strong nucleophile in order to attack on the carbon so that the leaving group leave on its own. तो क्या करना पड़ेगा? वाटर को इंतजार करना. Like water will wait. If the leaving group leaves, then it can attack. ठीक है, तो these are the 3 main criteria. 3 डिग्री 1 डिग्री में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. 2 डिग्री में कंफ्यूजन होती है, तो 2 डिग्री में क्या देखना है आपको? चार्ज देखना जल्दी. ओके, another thing that also decides this thing SN1 or SN2 is the solvent. लेकिन आपको majority of the time in board examination they will generally give you which one will go SN1, like what will be the rate of SN1. So 3 degree, 2 degree, 1 degree, and और अगर intense जाएंगे then you will have benzyl and allyl, they will also favor SN1 only, है ना? Because benzyl and allyls they are going to show resonance when carbocation is formed. Benzyl और allyl भी इस केस में आ जाते हैं.
ठीक है, जैसे आप इफ यू हैव अ एग्जैक्ट क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। तो जनरल ओवरव्यू हमने दे दिया आपको, कोई एग्जैक्ट सवाल है फिर आप बताइए। और इफ यू हैव टू डिफरेंट क्वेश्चन, सर यहाँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, देन यू प्लीज लेट मी नो। ओके हर्षा? Okay, sir. क्या आप कैसे जनरल ओवरव्यू जानना था आपको या फिर कोई एग्जैक्ट सवाल था? No, sir, generally. जनरल ओवरव्यू तो यही है बस। ठीक है, 3 डिग्री बेंजाइल एनालाइन तीनों ही क्या दिखाएंगे, हमेशा दे विल शो यू SN1 कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वहां पे आसान होता है बिकॉज़ द कार्बोकेटाइन है स्टेबल। डन एवरीवन टिल हियर? Listen, please tell me. Is everyone done? Just waiting for Zaina. नेक्स्ट देखिएगा आपके पास फिर डाईअराइल ईथर्स। डाईअराइल ईथर्स, benzene ring, oxygen, benzene. Fine. Now both of the CO bonds. Okay, fine, Zaina, fine. It's the same days for also. ठीक है, आई थिंक गवर्नमेंट से होता है ना, किससे होता है? गवर्नमेंट के थ्रू आती है हॉलीडेज और स्कूल डिसाइड करता है? I नो think आइडिया। school. स्कूल, This तो यहाँ पे आपके पास बोथ ऑफ, government say the holidays have already started for Hajj, सॉरी व्हाट, not for. क्या कहा जाना आपने? Sir, school से है. स्कूल से है, अच्छा। Okay, so I was saying that since both of the CO bonds are having partial double bond, so this reaction does not occur, no reaction. Okay, so you will write here because it is difficult to break. There's some explanation लिखा है, and you will also understand. Diaryl ethers, diaryl ethers don't show reaction with acids because both CO bonds has partial double bond character. Partial double bond character due to resonance and difficult to break. Let me know if you're done writing. Then we will move on to electrophilic aromatic substitution of aniline. Aniline, anisole.
Waiting for Harsha. Please write it me. Electrophilic aromatic substitution of aniline. Of aniline. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. Alkoxy group of aniline. Oh, एक फिर हम aniline game my bad guy is anisole. ठीक है. Alkoxy group जो होता है anisole के अंदर is an activating group which increases the electron density of benzene ring at ortho and para position. Ortho and para position, leading to formation of ortho and para products. Ortho and para products. ठीक. इतना लिख लिया तो फिर हम लोग I will give you the reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने अभी फिनॉल का किया था, है ना? तो होपफुली आपको बहुत सारे like we have bromination in it, then we have Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, then we have nitration, sulfonation. ये सारे क्या है? All of these are electrophilic aromatic substitution reaction. ठीक है? Okay, हो तो please raise your hand. अब जैसे देख रही है आपको ठीक है. Let's suppose we have Br2. अच्छा यहाँ पे तो हमें ये लगाई नहीं, OCSC होगा, ठीक है ना? OCSC, ठीक है. Let's suppose you have Br2. Now Br2 generally it requires a catalyst, but because anisole में जो oxygen atom है, this is having lower pair electrons, and because it is showing resonance, and it increases the electron density at ortho and para position so much that it does not require any catalyst. It just requires acetic acid as a solution. CH3COOH, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है?
Now you will get two products. The OCH3 will be as it is. By the way, you can also see sometimes OMe. है ना? Me का मतलब methyl होगा. That is same as CH3. And here you will have Br because we are doing bromination. Similarly, आपके पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा. If I write like this, I hope there is no problem. OMe और यहाँ पे फिर आपके पास Br है. This is para. And next is if you have CH3Cl or any RCl in the presence of anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3. So the same position of the products, just the group will be different. In place of bromine, you will have CH3. Here we have added a alkyl group. Okay. Similarly, next chapter will be acylation, Fidelcraft acylation. So you'll have CH3 C double bond OCl. Same in the presence of anhydrous AlCl3. I'm just writing AlCl3. Okay, the chlorine will leave, है ना? और आपके पास क्या मिलेगा? You will have the acyl group, C double bond O and then CH3. Here also you will have the acyl group like this, C double bond O CH3. Next आपके पास है HNO3 in the presence of H2SO4. अरे both of these are taken as conc, है ना? दोनों ही क्या लिया जाता है? दोनों को ही conc लिया जाता है, conc concentrated. Let me write it. Conc HNO3, conc H2SO4. Generally, when we write HNO3 and H2SO4, there it means concentrated. We have to specially write dilute जब आपको dilute लेना होता है, because these are strong acids. है ना? यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास हो जाएगा नाइट्रेशन, NO2. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? NO2. राइट. तो खुद से बनाइए जरा. Draw this. Sulfonation does not occur. We will write why the sulfonation does not occur in the case of anisole. Raise your hand if you're done. Just waiting for Harsha now. ठीक. Next point, you will write it with me.
we are going to write few remarks. Please write. These are generally self-explanatory. फिर भी हम थोड़ा आप लोग को explain कर देंगे. ठीक है, please write. Anisole undergoes bromination in the absence of FeBr3 catalyst, because methoxy group is highly activating via placenta. ठीक है, through placenta. Second point जो है, anisole doesn't undergo sulfonation. Because in the presence of formed H2SO4, the ethereal oxygen gets protonated and the benzene ring is deactivated. Benzene ring is deactivated. देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस तरह से. Then you have OCH3. ठीक है, यहाँ पे आपके पास है H2SO4. ठीक है, oxygen CH3. Now this H plus will be attacked by the lone pair of oxygen and यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, that will be protonated. इथीरियल ऑक्सीजन कौन सा होता है, जो दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है ना, the oxygen of ether, that is known as ethereal. Now because the hydrogen is attached here, it will get a positive charge. Oxygen with a positive charge, it will pull the electron density from the benzene ring and making it electron poor, और इसको क्या करेगा, deactivate कर देगा. Make sense till here? Please tell me. Yes. Copy this down. देखिए अब ये सारे चैप्टर्स तो खत्म हो चुके हैं, मतलब ये सारे पूरे, दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड नाउ. ठीक है, बच्चा आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर. व्हाट इज द मंथ राइट नाउ, इट इज मई खत्म हुआ, जून जुलाई के बीच में वो खत्म हो जाएगा. हाँ, आप लोग की गर्मी छुट्टियां होंगी ना, देन आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस मॉर्निंग में, इसमें फिर और पढ़ाएंगे. हाँ, ये कर लेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस कर लेंगे, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री उधर से इन सम बैचेस एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस बैच. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी देयर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे फिर हम इन द समर वेकेशन एक्स्ट्रा क्लासेस में. ठीक है,
और वो ज्यादा नहीं होगा, इट विल बी लाइक 1 hour क्लास, बट इट विल बी डेली. एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काइंड ऑफ, इवन दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स काइंड ऑफ डेली क्लासेस अगर हो आपकी तो ज्यादा बेटर होता है. ठीक है, if you have daily classes then it is a bit better in organic chemistry also, but it is more useful in inorganic chemistry. DNF block elements, उससे पहले जो हम लोग लेंगे that will be coordination compounds. Let me know if you are done till here. चलिए, थोड़ा सा टाइम बचा है तो थोड़ा टाइम यूटिलाइज करके लेट अस स्टार्ट दी चैप्टर. जो आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हम लिख रहे हैं इसमें, बट कार्बोनिल कंपाउंड तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन होता है. हियर वी विल आल्सो हैव कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, एंड सी ए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं. बस क्या करेंगे हम लोग, बस और बस नॉमेनक्लेचर. ठीक है, और नॉमेनक्लेचर आपका कैसा है जायना, हाउ इज योर नॉमेनक्लेचर? So यस, हेलो, यस जायना, हाउ इज योर नॉमेनक्लेचर, आई पैक नॉमेनक्लेचर? I didn't get you, sir. How's my nomenclature? Like, हाउ इज योर नॉमेनक्लेचर, आई मीन आपका, do you have good command in nomenclature or do you not have much idea about IUPAC nomenclature, naming of organic compounds? no, I do. You have to find item B, aldehyde, ketone, and carboxylic acid. Okay. Now, in aldehyde, ketones, and carboxylic acid, we are going to study about a few things. For example, सबसे पहले तो हम aldehyde point, what is aldehyde? C double bond O and it will have one hydrogen atom. इसको ऐसे इस तरह से लिखा जाता है short. This is aldehyde. Similarly, you will have carbonyl compounds में एक और आता है, that is ketone in this. This is ketone. And how do we write it? तो लिखने का जो तरीका होता है शॉर्ट में, CO और इधर भी कुछ लगा रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, कीटोन. देन द नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, C double bond O and OH. तो शॉर्ट में लिखते हैं कुछ इस तरह से COOH, which is carboxylic acid. ठीक है, then similarly we have esters which is like this, C double bond O and OR. Okay, this is COOR. We are going to see this ester also, but we are not going to do like method of preparation and chemical properties of ester, but we are going to see this. And then we have acid anhydride. So basically क्या होता है, this is R, C double bond O, then oxygen atom, then again carbon double bond O, यहाँ पे R. It is basically RCO twice, which is bonded to oxygen atom. जैसे water होना H2O, there are two hydrogen atom attached to water, उसी तरह से बिल्कुल RCO. CO क्या होता है, C double bond O, which is attached with R, it is twice and on oxygen atom. तो इसको बोलते हैं acid anhydride. Acid anhydride. ठीक है, नॉमेनक्लेचर में जो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, आई विल टीच यू गाइस अबाउट द कॉमन नेम पैटर्न, बिकॉज आई पैटर्न नेम आप लोग को पता रहता है, कॉमन नेम पढ़ेंगे हम लोग. नॉमेनक्लेचर लिखिएगा, नॉमेनक्लेचर. ठीक है, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले कॉमन.
लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने, हर्षा एंड जरना? Yes, sir. हर्षा, आर यू डन राइटिंग? Yes, sir. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा नहीं है आपको, ठीक है ना? सो देयर आर समथिंग ना, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, ठीक है, एंड एसिटोफेनॉल, राइट? तो दीज आर द वर्ड्स जनरली यूज्ड। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो देयर इज वन वर्ड कॉमनली यूज्ड, दैट इज एसिड, ACET, ठीक है? तो एसिड जब भी आए तो आपके पास ये फ्रैगमेंट जरूर होगा, यू विल हैव दिस फ्रैगमेंट, CH3 C डबल बॉन्ड O। नाउ अगर ओन आ जाए तो कीटोन बना देना है, एल्डिहाइड आ जाए तो एल्डिहाइड बना देना है, फिनॉन आ जाए तो फिनाइल ग्रुप लगा देना है। तो बेसिकली देखिए, अगर आपको यहाँ पे आपके पास एसिड है, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, तो नाउ CH3 C डबल बॉन्ड O विल बी प्रेजेंट। हम क्या करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, बताइए जरा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सोचिए इस बारे में जरा। See, my question is, if you have acetaldehyde, what should I add to this fragment to make it aldehyde? Tell me, guys. इस फ्रैगमेंट में हम क्या ऐड करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा? Hydrogen. सॉरी, व्हाट हर्षा? Hydrogen. हाइड्रोजन, सही है, मेक सेंस है ना? इसमें बस ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। यस जाइना, मेक सेंस? Yes, sir. सिमिलरली आपके पास है एसीटोन, क्या है एसीटोन? ये आप एसिड का मतलब ये फ्रैगमेंट तो होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O विल बी देयर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट टू ऐड ऑन दिस पर्टिकुलर एसिड टू मेक इट अ कीटोन? कोई भी अल्काइल ग्रुप डालेंगे तो आपको कीटोन बन जाएगा, लेकिन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप यू कैन ऐड टू मेक इट अ कीटोन? यहाँ पे जैसे आप अल्काइल ग्रुप डाल दिया आपने तो इट विल बी अ कीटोन, बट व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप दैट वी कैन ऐड टू मेक इट अ कीटोन? कितने कार्बन का होगा स्मॉलेस्ट? व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप, कितने कार्बन का होगा? हर्षा एंड जाइना? Yes, sir. CH. सॉरी, हाँ CH, करेक्ट। जोर से बोला करें हर्षा, आप बहुत धीमा बोलते हैं, बहुत धीमा बोलते हैं, ठीक है? तो उसी तरह देखिए, मान लीजिए कि आप एसिटिक एसिड, एसिड है आपके पास, तो नाउ यू नो दैट यू हैव टू मेक CH3 C डबल बॉन्ड O विल बी एज इट इज। अब क्या लगा दे इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। व्हाट शुड आई ऐड हियर? बोलो। ये OH. यार इसमें टाइम लगा रहे हैं। हाँ जाइन, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जाइना? हाँ सुन रहे हैं Yes, आप, sir. लेकिन नाम लेंगे तभी आप आंसर दीजिएगा क्या? हाँ, ठीक है। अब यहाँ CH3 ये तो कहाँ से है, एसिड से है, उसके बाद क्या है, फिनॉल। फिनॉल में फिनाइल बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट। कॉपी दिस डाउन।
Raise your hand once you're done. Harsha and Zaina. ठीक, ऐसे इस तरह का होता है, एसिड जैसे होता है ना वैसे होता है एक फॉर्म, FOR। फॉर्म का मतलब होता है ये फ्रैगमेंट H C डबल बॉन्ड O, है ना। और जिस तरह से एसिड में कार्बोनिल कार्बन पे कुछ लगा रहता है, वैसे यहाँ पे भी कार्बोनिल कार्बन में कुछ लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड O, एंड हियर विल बी सम ग्रुप। ठीक है, ये बन नहीं रहा मेरे से पूछे। यहाँ पे कुछ तो पता है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा, H कार्बन डबल बॉन्ड O, क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, HCHO। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज HCHO। ठीक है, उसी तरह से आपके पास है फॉर्मिक एसिड, यही दोनों होता है इसमें बेसिकली, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। इसको कैसे लिखते हैं, HCOOH। अब उसके बाद कुछ और कॉमन नेम्स हैं जो कभी कभी आ जाता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कॉमनली 4 कार्बन आइटम इज नोन एज ब्यूटाइल। ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 कार्बन आइटम CHO, इसको बोलते हैं ब्यूटेराल्डिहाइड। ब्यूटेराल्डिहाइड। सिमिलरली इफ यू हैव 1 2 3 4 कार्बन आइटम COOH, बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। उसके बाद आपके पास 1 2 3 कार्बन आइटम CHO, इसको बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद है आपके पास 1 2 3 कार्बन आइटम COOH, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको मतलब मे बी if they ask what is the common name of butanoic acid, तो मे बी आपको ब्यूटायरिक एसिड याद नहीं आए, बट इफ यू सी दिस वर्ड ब्यूटायरिक एसिड, तो ब्यूट से 4 कार्बन आपको समझ में आ रहा है, एक एसिड से यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड जनरली दैट वुड हैपन, दे विल नेवर आस्क यू द कॉमन नेम। The common names are used in questions. The common name they are used in some big questions, some small questions. Common name को use कर लिया जाता है. For example, butyraldehyde reacts with this reagent. What will be the product form? Butyric acid. ठीक है, for example, compound A reacts with this to form butyric acid. So what is the compound A? तो यूज जनरली किया जाता है क्वेश्चन से, है ना, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, मतलब पूछ तो सकते हैं, ऐसे तो क्या ही पूछा नहीं जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है, but generally it is not, it has never been asked, I would say, rather in the last 10 15 years of CBSE board examination, it has never been asked like what is the common name of butanoic acid, what is the common name of butanol. Yes, this type of question they have not asked. Copy this down, raise your hand once you're done.
Waiting for Harsha. So that's it for today. There will be a test activated in your Learnivio app. Maybe abhi it is not activated, it will be activated in 15 minutes. Okay. And we'll start from a few more nomenclature that we have to do. Miscellaneous nomenclature, IPAC only, not common. And then we will start mainly with method of preparation of aldehyde and ketones, which is a big portion because it has been divided into three categories: method of preparation of aldehydes only, method of preparation of ketones only, and then we will look at the method of preparation where we can have aldehyde and ketones, both of them. ठीक है? So that's it for today. अब ये आपको एक काम करेंगे हम, can you please message me? हम थोड़ा भूल जाते हैं चीजों को, है ना? तो आप लोग प्लीज हमको मैसेज कीजिए. I will send you this. Now you need to start practicing this part, है ना? यहाँ पे आपके पास product और remarks and everything is there, and here you have a blank sheet. You will take one copy of this particular sheet that is with the products, है ना? And you will take at least 30 pages or 30 sheets of this part, जहाँ पे आपके पास product and remarks are blank, and you will start practicing daily. ठीक है? हर्षा एंड ज़ैना हो सके तो अभी मैसेज कर दीजिए. ठीक है, तो हमको याद रहेगा. आई विल सेंड यू द पीडीएफ. इसमें एक पेज में क्या होगा, यू विल हैव दिस पार्ट व्हिच यू विल प्रिंट वन एंड लाइक पेस्ट इट इन द ऑन योर वॉल और समथिंग, बट यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ विद दिस पार्ट. ठीक है, तो गर्मी की छुट्टियों में आपका काम मतलब हम कुछ कुछ देंगे. इसमें से एक काम ये भी है, बिकॉज आई हैव मेड फॉर अल्कोहल, तो अल्कोहल वाला थोड़ा आसान भी है बनाना. ठीक है, एंड एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक हियर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा. व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट द ब्लू, ग्रीन एंड रेड? इफ यू कैन सी, ब्लू, ग्रीन और रेड में अल्कोहल है. क्या आपको समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? व्हाइट इज ब्लू, व्हाइट इज ग्रीन एंड व्हाइट इज रेड. व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज थ्री अल्कोहल्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड? Primary, secondary, and tertiary. हाँ, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट. जाना, कैन यू सी दैट? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली आपके पास मतलब एक तक जनरल है आपके पास. व्हाइट में क्या है? इट इज जनरल अल्कोहल. एंड उसी तरह से प्रोडक्ट्स भी हैं. फॉर एग्जांपल, like whether it is 1 degree, 2 degree or 3 degree, the OH will be replaced by chlorine if you react with SOCl2. The OH will be replaced by Cl if you react it with HCl. The OH will be replaced by halogen. No matter whether it is 1 degree, 2 degree. But let us suppose if you have copper in the presence of heat, then it depends whether you are having 1 degree alcohol, 2 degree